Good evening, everyone. I am Jay, the intern, and today I would like to talk about my topic, uh, which is on rights of under trial prisoners and arrested persons. So, uh, I would like to start by the meaning of under trial prisoners and arrested persons. So, who are under trial prisoners? So, if I bilingually speak in Hindi and tell about who are under trial prisoners, so अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर बेसिकली हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूँ तो विचाराधीन कैदी और अरेस्टेड पर्सनस का मतलब अ पर्सन हु इज़ पुट इनटू कस्टडी फॉर ब्रेकिंग द लॉ यानी इंग्लिश में पूछूँ बोलूँ तो गिरफ्तार व्यक्ति. So, summing up both the terms, we are going to talk about the rights of under trial prisoners and arrested person यानी गिरफ्तार व्यक्ति और विचाराधीन कैदी की अधिकार की बात करेंगे आज. Now, before we move further, a question pops up in our mind that why are we concerned about the rights of under trial persons and arrested persons? Besides the fact that we are going to be lawyers, what else motivates us to study their rights? So, to answer my question, I would like to uh, tell that it is nowadays very easy to lodge an FIR, and against anybody, be it male or be it females, it is very easy to lodge an FIR against someone without having any evidence to support. And how draconian it is to spend life behind bars when you are not even a criminal. So, to prevent the misuse of laws, we must be aware of the rights of under trial prisoners and arrested person. और इसी बात पर एक शेर और ऑन अ लाइटर नोट आई वुड लाइक टू से दैट एक शेर याद आता है जो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करता है इस पूरे टॉपिक को. इस हैवानियत की नगरी में फैसला अब एक तरफा होने लगा है, गुनेगार बाइज्जत बरी और मासूम बदनाम होने लगा है. सो दिस डिपिक्ट्स आवर टॉपिक और यही रियलिटी है जैसा हम सब जानते हैं. सो दिस सम्स अप एंड जस्टिफाइज आवर आंसर. So, moving ahead, and since we are the students of law, we all have studied CRPC. We must know that there are three procedure of categories of criminal cases in India. Three categories. यानी हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूँ तो तीन विभाग में क्रिमिनल केसेस होते हैं. पहला, फर्स्ट, प्री ट्रायल स्टेज. सेकंड, ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज. एंड थर्ड, पोस्ट ट्रायल स्टेज. So, in which an accused becomes a convict only and only when he has been decided to have committed the crime by judges after trial. और मज़े की बात यह है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है एक्यूज्ड की. इसी वजह से चाहे वो मुजरिम हो या ना हो, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स तो होगा ही होगा. ये फैक्ट है, ये होता ही है. And statistics too show that the accumulating numbers of under trial prisoners in India is one of the most foremost problems of today, and statistics never lie. So this is one thing we are going to talk about. Now, talking about the prisoners' rights, now we can broadly classify it into two categories. First is through international standards, and second is through domestic laws. Now, coming to international standards. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसलिए क्योंकि इंडिया इज़ द फिफ्थ कंट्री टू अडॉप्ट UN कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन ऑफ जेनीवा, in which all human rights must be followed as per international standards. So, रूल 86 ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं, कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स शुड बी गिवन सेपरेट रूम टू रिजाइड फ्रॉम द नॉर्मल प्रिजनर्स. और ये फॉलो होता है. रूल 87 कहता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स शुड हैव अ चॉइस टू अरेंज फॉर देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड, आइदर थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और थ्रू द लव्ड वंस. तो ऐसे ही काफ़ी सारे रूल्स बनाए हुए हैं ह्यूमन राइट्स में. सो नाउ कमिंग टू इंडियन लॉज, द डोमेस्टिक लॉज, एंड विच वी मस्ट टॉक अबाउट. Article 21 of the Indian Constitution provides
First, a right to speedy trials. Second, no handcuffing. Third, a right to legal aid. Fourth, right against inhuman treatment of prisoners. Fifth, right to be informed and to meet family members and friends. And sixth is right to engage lawyers. So these are international laws and domestic laws. Besides them, there must be more of them. But today, my assignment of the topic which I spoke about, is limited to international law as well as domestic laws, uh, considering India and UN. Alright, so at last, I would like to end my presentation by quoting former former district magistrate and finance minister of India, none other than Yashwant Sinha himself. And his quote very well describes our topic. And at conclusion, I would like to quote him. He says, and I quote, सबको सब पता है मगर कोई किसी से कहेगा नहीं. कातिल का नाम सबकी ज़ुबान पर है मगर कोई किसी से कहेगा नहीं. कत्ल का मंजर सबकी आंखों में कैद है मगर कोई किसी से कहेगा नहीं. अदालत, मुंसिफ, थानेदार, सबको गुनहगार की खबर है मगर कोई किसी से कहेगा नहीं. So this is what he quoted from his book title of Confession of Swadesi. So that's all. Thank you everyone for being so kind and patient. Thank you.